I'll just show you it's working on my phone and it's online. मैं हैरान हूँ तुम्हारे पे नहीं चल रहा seriously. So honestly, मैंने इंटरनेट अपना मोबाइल का तो ऑन करके किया है, मैंने उस तरह किया है, हो ही नहीं रहा वैसे। So what we'll discuss today is okay. First of all, we'll discuss is this simple query wizard. Why do we use it? For example, let's look over here. Let's say you get a question that says that create a graph or a chart that will display the customer ID and the count of customer ID and the total of the or total of the party number. बात समझे हो? Now इसके there are multiple ways. पहले मैं आपको तरीका बताया तो I can simply come to query wizard, simple query, add bookings table. Obviously it's added. We add the customer ID, you know that, and we need to add the priority number. Fine. Next, come to summary options, and you will see over here we can calculate the sum, average mean, and yeah, we can either of these. Okay, Kia. And next, finish. We get the customer ID, we get the sum of the party, and we get how many times it's appearing. How many times this is appearing? How many times? This is appearing 4 times. Now, maybe the examiner might even say that create a graph or a chart of all those booking appearing more than once. So I'll do is I'll come over here and I'll say greater than 1. I get this, and then I can export this and make a graph of this. Get the point? Okay. At times, okay, this is perfectly fine. Now, this will work when you have to make compare, sorry, between a column that has text and with a column that has numbers. Okay, it cannot compare both with the text or both with the number. You let's say get stuck. काउंट रिकॉर्ड्स तो कर सकते हैं फिर भी। वो मैं आपको हाँ काउंट रिकॉर्ड्स उसके लिए बेहतर तरीका ये है, उसके लिए बेहतर तरीका ये add the booking table, for example. Let me add the customer ID. I get the following. Are you following me? Yes, sir. And now if I want to just use this and count, then what I can do is click on totals, add the customer ID again, group by, and say over here count. Okay, you probably will discuss in the class as well. आप समझ आइए? Now this means I don't need another field to compare. I can simply now count this and all that. ठीक है? ठीक है सर। You know that, you know this. समझ आ गई? What is cross is something different. I'll just first of all give you a demonstration. If you don't get it, I'll explain it again. Cross tab क्या होता है? Cross tab में you will see is you have rows, row wise, you have data column wise. So, one field is appearing this way, the other field is appearing this way. So it's two dimensional. Simple query में gets one dimensional. Fields ऊपर आ रही हैं. Fields are coming here and fields are coming here. Okay. Two dimensional Two dimensional होगा. So for example, the examiner will tell you that create a cross tab of if such kind of question comes, examiner will tell you what will come in the row and what will come in the column. ठीक है? Next. सर ऐसा कोई हमें खुद से तो नहीं लेना कि ये वर्टिकल में No, no. क्योंकि diploma papers question आया हुआ है, so it's always like this. Don't worry. Obviously, first time they will not confuse you much. So let's say the examiner might say, add the customer ID in the row. Telling you, right? Next. What should come in the column? Column में probably कहेंगे, let's say आ जाए party number. ठीक हो गया. And they might say that number of courses को count कर लो. They will tell you everything. You'll see what happens. If I say finish, just give you a rough example. ये party numbers आ रहे हैं, ये customer ID है, ये इनके दरमियान में आए. That this is I just gave you a very rough example. Obviously, a more sophisticated example will have not such a lot of data. But you see one field this way, one field this way, or दरमियान में you have another field से comparison होगा. This is cross tab. It's two-dimensional table where two different fields appear in row wise, column wise, and दरमियान में there is an intersection जिसमें you have
सो बेसिकली इसके अंदर तो टोटल आ रही हैं वहां पे स्कैटर्ड है ये इसको हाइड कर सकते, ये टोटल इसका टोटल है, लाइक 2 1 ये प्लस 1 सारी प्लस 1 इसका है टोटल है। एक्चुअली इसको यू कैन इवन हाइड इट, इसकी जरूरत नहीं है हाइड। दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट दैट यू वांट। You get the point. This is cross tab. अच्छा, there are two names of the cross tab and pivot table. We call it cross tab and pivot table. पेपर Pivot table. Pivot. P-I-V-O-T. Pivot tables. पिवट टेबल Yeah. Excel में इसको pivot table कहते हैं. Access में we call it cross tab. से एक्सेल में ये स्कैटर्ड ग्राफ्स के लिए भी यूज हो सकता है ना? जी बिल्कुल. Exactly. बिल्कुल सही कहा. So it's in sort of like a nuance point. आप देख रहे होगे, and it's a way to summarize data. You're summarizing data, aren't you? It's a very different way of summarizing data. I will give you activity for this. Don't worry. अभी तो I'm just demonstrating you ना. I will give you activities जिनमें ऐसा आपको करना पड़ेगा. Then you have this option that says find duplicates. डुप्लीकेट कर जो दो डुप्लीकेट फील्ड्स होंगी उनका डिस्कस किया हमने पहले. आपने पहले सिर्फ इसका थोड़ा समरी बताया था कि डुप्लीकेट किया था ना हमने. क्या This is important as well. देखो ना, अच्छा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो सिर्फ डुप्लीकेट फील्ड्स सिर्फ डुप्लीकेट फील्ड्स आएंगे. जैसे C2 एग्जैक्टली. ठीक है. मैं बता देता हूँ आपको एक बार. बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड डुप्लीकेट्स में जाओ, select the bookings table, select the customer ID. Next, do you want the other fields to accompany along? Yes, I would like to. And you finish. So I don't get any unique entries. I get all the duplicates. Again, not a point that has come till now, and obviously can come. Then is unmatched. Have we discussed unmatched? नहीं Unmatched को मैं demonstrate करने के लिए ना, I think so we did last time. नहीं. अच्छा, एक काम क्योंकि करो. आपने क्वेरी विजिट में से सिर्फ एक ही ठीक है, मैं फिर ना इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, उनको डिलीट करता हूँ. बहुत ही काम बेकार थी ना. So I'll just copy this and I will paste it so I get a copy of this. मैं कॉपी को ओपन करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि जो कस्टमर आईडी है ना, इसमें मैं करता हूँ लाइक चेंज कर देता हूँ. 3 records I will temper. Now these 3 customer ID that I have changed are not present in booking. The original one. Let it be like the concept of transaction file and the master file. ठीक है ना, पता है concept transaction file master file का payroll system में. Yeah, देखो. What happens in a payroll system, you have is a master file. Master file में you have the employee number. अच्छा, वो जो बैंक वाला सिस्टम Exactly. वो एक बैंक के पास होती है और एक वो जो जी. उनके पास Or during the month, at the end of the month, there is a transaction file created where you have the let's number of say transactions exactly. और वो आपके master file से merge होगा, and then you will have as a new master file merged. Okay, so you have a transaction file, your master file, and your master file. This cycle goes on every month. तो जो भी period होगा उसके दौरान ही होता रहेगा. So you can get an example because if you have a transaction file and a master file, obviously one thing that will common will be between a master file and a new master file is the number of fields. Fields have to be the same. ये वो example मैं आपको दे रहा हूँ. For example, these 3 new people joined in. Okay, I want to know who these 3 people are. So what I will do is I will look at unmatched. Unmatched will say that you need to compare 2 tables. Okay, fine, 2 tables or 2 queries, whatever. I need to compare copy bookings with bookings. Okay. पहले हमने वो लेना है जो ओरिजिनल नहीं है. जी बिल्कुल. जी. And I need to compare customer ID with customer ID, the field that probably has the changed data. Next. And you want other fields to accompany becoming wrong? Yes, I would like to. And you finish. I get those 3 records that were there but were not there. This could be a very good and a tricky question, and it's very much in your syllabus. I'm telling you. This आ सकता है, tough point आ सकता है. तो इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा? बस सीधा आएगा, ये मास्टर फाइल ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल से इस तरह आएगा. इसको स्कोर करना भी आसान है. हाँ. इतना इजी सा. मतलब unless until you don't know the procedure, it's difficult. मैनुअली काम नहीं हो सकता. किस तरह होगा मैनुअली काम? नहीं ना.
आपको example gives you like 800 values. स्टूडेंट 800 values चेक करेंगे नहीं नहीं करेंगे ना. स्टूडेंट्स करेंगे काम, आधे घंटे में वेस्ट कर देंगे, फिर सेकंड ये काम हो गया. You get the point? Yeah. You will forget it. नहीं Yeah, ठीक है. बस मैं इधर लिखूँ. ठीक है बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपसे डिस्कस करना है क्यूरीज में. टिल वेयर डिड वी डिस्कस लास्ट टाइम? क्यूरीज में लास्ट इसके क्या था इसके साथ सारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के हैं और ठीक है. क्यूरीज में वी डिस्कस वाज कॉन्कैटिनेट. यस है ना? ईमेल वाला वो बनाने वाला सारा वो भी कर लिया था. मिड राइट लेफ्ट हो गया. मिड राइट लेफ्ट वो इसी का नाम हो गया. अच्छा, आईएनटी हो गया. आईएनटी में हो गया. इंटीजर, राउंड अप राउंड डाउन सारे हो गए हैं. राउंड अप राउंड डाउन नहीं किया. राउंड अप राउंड डाउन इज प्रीटी. वो राउंड अप कर देते हैं वैल्यू को राउंड जी डाउन जी जी जी, pretty easy. Format, फॉर्मेट किसका फॉर्मेट to change the format of this date, create a new field that displays this as in a different format. नहीं No, we did not discuss that. अच्छा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. वो डेट नाउ वो सारा कर दिया. वासिल, can you turn on the exhaust? ये पेपर से क्या आ रही है इसमें? I'm sorry that this was just recorded. Okay, new format. ठीक है. So I will just use the function format. It's a function, so obviously function has to be within this bracket. Any problem? Bracket. ब्रैकेट या कौन से ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट Okay. Listen. You do know that whenever we have any functions, तो हम वो वाले we always use. दूसरे ब्रैकेट सिंपल G. We would. सर्कुलर Yeah, ब्रैकेट. what am I doing? Oh, enter press shift. And whenever we have any scripting, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं. curly bracket. अच्छा सॉरी स्क्रिप्टिंग फॉर्मूला के लिए होते हैं. Databases के लिए we always use this. ओके जहां भी डेटाबेस होगा ये यूज होगा. स्क्रिप्टिंग का मतलब आपकी जावा स्क्रिप्टिंग हो जाए या सीएसएस हो जाए, किसके रिसर्च में वो तो हम प्रैक्टिस में करते हैं स्क्रिप्टिंग. नो सीएसएस तो करते हैं. जी सीएसएस सीएसएस में कौन सा ब्रैकेट यूज होते हैं? H1 में कर ली, याद है ना? Hmm. It's a rule. So you have to remember function will always use this. You have to remember that my database will always use this and my scripting will always use this. Please, it's a universal rule in computing. You have to remember it. Okay, this will never be disobeyed. Okay, so what I'm saying is that if I use a function format, or format के अंदर I have a field which is date, and this has to be obviously you do know सेम होना चाहिए. बुकिंग, और ये मैं कहूँगा कि इसको, अब इसको देखो, डेट ऑफ बुकिंग जो है इट्स अ फील्ड, कॉमा आई विल नाउ डिफाइन अ न्यू फॉर्मेट सच एज डे आई, मंथ एंड ईयर. ये आपने क्लास में डिफाइन किया था फॉर्मेट. किया था ना? क्लास में डिफाइन स्पेलिंग किंग स्पेलिंग करते हैं. बुकिंग डेट ऑफ बुकिंग इज स्पेलिंग. तो बेस्ट है. बर्ड्स वगैरह होते हैं बाहर. There's a lot of wildlife over here. Date of book. What is probably wrong? बताओ. फॉर्मेट क्या मतलब? डेट मंथ ईयर. तो कुछ नहीं लग रहा है इसके लिए. हाँ. डेट के अंदर आपने डाटा डाल दिया सर. डेट के अंदर आपने एंड पे ई की जगह ए डाल दिया. I'm so sorry. You're right. पैरामीटर जब भी आएगा ना. And did we discuss static parameter and dynamic parameter? नहीं सर पैरामीटर का क्लास में भी नहीं. नहीं क्योंकि आप मुझे भी बताया था कि वो वेरिफिकेशन आपको देती है. For example, how many string do I have? Okay, Chapman. Right. So, for example, this says that you have to find all the customer surname that are Chapman. So obviously we'll do this.
This is known as a static parameter. Static parameter means static query or static parameter query. Okay, so we call this static parameter query. Or the examiner could use the word static prompt query or static search query. There are three names. ओह सर्च इसने बार बार यूज किया था 2013 के पेपर में मगर सर्च दिस एंड सर्च दैट एंड दैट वो ये पॉइंट अभी तक नहीं आया. अच्छा वो वैसे सर्च उसका होगा उसमें. तो सर उसके अंदर वो एक ही क्वेरी को बार बार मॉडिफाई किए जा रहा था हाँ 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 बट हाँ मैंने हाँ. उसके लिए 3 डिफरेंट बनाई थी क्योंकि उसके अंदर एक ही के अंदर करते थे तो वो अगर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट के अंदर आ जाती फॉर एग्जांपल तो फिर वो दोबारा से प्रोसेस आपको कंट्रोल सी करके जी वो तो बैक है करना वो तो है इसीलिए obviously. मैंने 3 क्वेरीज अलग-अलग बना दी और मैंने इसको अच्छा डबल 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 ठीक बार-बार है सर्च अनलेस एंड अनटिल आपको फाइनल रिजल्ट ठीक है इट्स फाइन. इट्स ओके यू कैन श्योर. अच्छा ये क्या क्यों समझाऊं मैं आपको. Now what is the difference between this and what I'm going to explain you now? Instead of this, if I put आप लिख लो it's better that you write. इससे मैं ऐसे देखते वेट करती Sure ठीक है. But it's very good when you write. If I write over here is enter प्लीज the courtesy से लगती है. So now if I do this, I sure मैंने डिस्कस नहीं पहले किया है. ये आपने किया था प्लीज एंटर आया समझ आया. हम्म So इससे क्या फायदा हो रहा है. Every time I run, it will ask me what you want to enter. And इसे बार बार यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा ठीक है. This is known as dynamic parameter. It's known as dynamic parameter. Static and dynamic. अच्छा dynamic का फायदा पता है क्या है? You tell me. सर बार बार यहाँ से चेंज नहीं करना पड़ेगा आपकी और आउटपुट में कोई फर्क आउटपुट में भी कुछ होगा. आउटपुट If I run this and if I write over here is this Chapman and if I make a report of this then what will happen? If I make a report of this, what happens then? Obviously, the report is created. Obviously, Magar, the advantage is that if I now open up this report, it will ask me for. We had saying right? S I N G. दोबारा पूछे वो सिंग उस पे सिंग के स्पेलिंग होते हैं. S I N G. N G H. S I N G H. Sing भी था ना. I won't change it. Do you see what's happening? आप Automatically. के लिए खुद भी चेंज कर सकते हैं I don't have to go to query. मैंने query में लगा दी. Every time report में बड़ा काम की चीज है ना. है ना. और इसमें अच्छा अगर even if you discuss this ना let it be revision. Okay, let it be revision क्योंकि point important है. मुझे नहीं पता डिस्कस किया आपके साथ नहीं किया मगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ. Okay, क्योंकि अगर ये point for example मैं इसको इधर I'll add another field. If I add over here is number of courses. Now I have the number of courses starting from 1 and going till 3 बहुत हो रहे हैं. I'll add something else. Yes, Isa. I think so. You can say Assalamu alaikum when you walk in. 1 to 10. 1 to 10 है ना? जी. अब इसका फायदा बताऊँ क्या है? अगर इधर आके मैं लिखता हूँ between और मैं enter the first number or and enter the second number. So what will happen is वो आपसे पूछे आप किस नंबर से किस नंबर तक आपने जी so I enter is 2 and 5 so I get between 2 and 5. Why is it happening? Because of this. इंस्टेड अगर 1 to 10 करते तो 1 to 10 से आएगा जी बिल्कुल. So between this and this मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर ये and दूसरे के अंदर ये. Clear or not? Very good. This means we can even have less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to वो भी आ सकता है. सारे फॉर्मूलाज हम डायनामिक पैरामीटर से भी कर सकते हैं. मगर if the question says so, only then. अगर सर ओवर एफिशिएंसी करें फिर जरूरत नहीं है ना. मार्किंग तो नहीं Point है कि you have not been asked to do something. Why do it?
ठीक है ना? डोंट वरी, आपको मैं जो क्वेश्चन आपको उसको दूंगा इसको करने को, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, वैलिडेशन इज क्लियर? एक्सेस में वैलिडेशन इज क्लियर ना? हाँ ठीक है। अच्छा, we have discussed this as well. 90 हो गया, डेट का फॉर्मेट कर लिया, डिस्कस विद यू, राइट मिड लेफ्ट भी हो गया, राइट। व्हाट अबाउट लेबल्स? लेबल्स हम डिस्कस, हाँ लेबल्स क्लास में तो डिस्कस किया है आपने। हाँ, एक बात, एक काम जरूर करना कि whenever you do create labels, do you know how to add a box at the back? मैंने कहा हुआ आप लोगों को, जी वो जरूर ऐड करना है। वो दूसरा बॉक्स होता है बैक में स्क्वायर रेक्टेंगुलर या बॉक्स, वो मैंने उसी से याद किया, वो ब्लैंक बॉक्स होता है। हाँ ब्लैक बॉक्स, वो अपने ऐड करना है जरूर बैक पे, ठीक है? तो वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, उसका वेरी बॉर्डर वन गुड, कर you देते very हैं। good. Forms, is it clear? यस सर, How to फॉर्म्स add a तो combo क्लियर है, box and वो everything? यहाँ पे भी आपने बता दिया था कि ठीक कैसे है। ऐड करना है। सर टेबल डिजाइन क्या है? Table design बेटा ये बात सुन, for example, the examiner might ask you to create a table from scratch and enter the data. For example, we have imported one table and the examiner says कि ये जो table है वो उसमें तो ज़्यादा record नहीं देंगे, you have to create it yourself. So obviously what you will do is you will go to create, नया table बनाओगे, and you will अच्छा, define. अगर वो कहे कि एक फाइल का पहले ये टेबल फॉर्मेट करो, उसके बाद उसी को इंपोर्ट कर दो उसके अंदर, Yes, ये क्वेश्चन जी, करके दिखाएं, करके दिखाता हूँ। Good question, very good. I need to see is एक सेकंड, मैं आपको बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट कराता हूँ बात। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपके ज़हन में है। ये देखो, ये ना मेरे पास, इसमें काम करते हैं, ऊपर वाली फील्ड डिलीट उसमें आता तो है। सर ऐसे याद ठीक है। अगर कोई मिस्टेक अच्छा करी होंगी तो उसको ठीक है हाईलाइट ठीक कर है ठीक देना। है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, मगर मैंने क्लास में नहीं बताया हुआ। नो, ये मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया वेरी था। गुड, मैंने आई वोंट टोल्ड हिम। ओके, आई डिलीट दिस एज मैंने ओके बिकॉज़ आई जस्ट वांट, उप्स, मगर क्या कहते हैं, टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैं सिर्फ इतना कर लूँ, इतना लंबा फिर ओके एग्जामिनर कैन गिव यू फॉर पर title first name last name, ठीक है? So I'll delete this and we will just save this. Yes. Okay, मैं न्यू ओपन करता हूँ and I'll go to external text file. इससे पहले मैंने टेबल बनाया था, उसके बाद उसके अंदर वो भी ठीक है, तो ये पॉइंट में आता है, मैं तो आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। You know this point, right? उसके अंदर सेकंड वाला करना होता है ना, देखो, टू टेबल वन और समथिंग। you'll do for example append वाला, no I saved it. Append वाला याद है? क्या वाला सर? Append, अपेंड append, no? नहीं। I hope I have the file. एक second. Let me explain you that. Just rename this. Yes. No, I don't need any pen. क्या स्टूडेंट की क्लास लिस्ट थी, मैंने गलती नहीं ओपन किया, यही था जी सही था। टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना? या मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे क्लास लिस्ट के नाम से। ठीक हो गया।
Then what I'll do is just delete this और मैं इनको कर दूंगा let's say whatever जो भी है ठीक है सेव कर file I will save it as I will name it as 2 एक डिफरेंट सेव की एक डिफरेंट सेव की बट है मगर मेरा डिफरेंट है so what I'll do is if I import the very first one which is this one I'm sure I can obviously import हो जाएगा I'll keep on doing this then I'll go text file again I will say 2 then I will use append okay and then I will say okay fine and finish उसी में ऐड हो जाएगा get the point नहीं किया था पहले वाला excellent समझ आ गई है ये पॉइंट आया अभी तक मैंने नहीं कहा append वाला पॉइंट append वाला आया हुआ है उसके अंदर पहले उन्होंने फील्ड्स दी हुई हैं सारी और उसके वो डिफाइन करना था नंबर और सारा न्यूमेरिकल उसके बाद उन्होंने फाइल दी हुई थी कि इसको ऐड करो तो उसकी फील्ड नेम्स नहीं थे ठीक है तो उसको भी मैंने अपेंड से किया था क्योंकि फील्ड नेम्स हमने वैसे डिफाइन किया वेरी गुड ठीक है नाउ इसको थोड़ा सा पॉज करो बिकॉज़ आई एम जस्ट बिट कंसर्न